Yeah, hello everybody. So as in the midst of the class, I had to go for a meeting, so I could not complete the today's part. So that's why I thought that I have to show you the hands-on session over this platform. Go through this, whatever the experiment will show you, whatever the topics we discuss, please go through it. And the assignment means the practical session, do it, don't skip, right? So you have seen that in which cases we use line plot, right? To basically show the changes, right? Changes means changes over time. Now, in that particular means program, what we have used is this PLOT plot, right? And this plot we have taken from PLT, that is basically the pandas, right? Panda means pandas, that one we have inserted for this data frame. And this pie plot, okay, that pie plot we have got it from Matplotlib. That things we have discussed in the class. Now I think it is up to this part very much clear. And you can see that I told you now, after doing the practical, you get to know that what are these parameters. So basically you can see here, this is marker means show the points on the line style, whatever the line style you prefer, then color, red, blue, like RB, then this grid function. So ultimately we got an output like that. So now next is bar plot. Right, line plot we have discussed. Now bar plot. Bar plot is used for comparing different categories. Right. So this represents categorical data using rectangular bars where the length of each bar is proportional to the value it represents. तो ये बार प्लेट क्या कर रहे हैं आपका? For comparison, for comparing different categories, like to compare different groups, then to highlight the differences in various data points and to analyze the frequency distribution. तो basically हम bar plot comparison के लिए use करते हैं. आप इसके लिए हमारा जो प्रोग्राम रहेगा आपका, इसमें same thing, we have to import that pie plot, right? This is PLT. Basically, you have to put here .bars. So we are using bar function for this bar plot, and there we have specified this like year, month, stock value, and the color green specified, and the title we have given stock value in different months. X level say month, Y level say stock value, and the rotation we have given, this is 45 angle, and then we are showing it. So we will get a bar plot like this. Let me show you in the spider also. Just a moment. I'm opening the spider for you. I have opened the spider, right? So here I'm going to write the codes. So basically we have already defined this import matplotlib, iplot as plot. And let me run the code for you. First say importing this data, right? Then so see, this is the output we have got. In the plot, you can see this is better way. This is the diagram, X value and Y value, month and stock value accordingly. And the values are like for January month, February, March. So you can see the difference here, means how the values are different for different months. So you can compare it, right? Like in the month of June, what is the value, and it is greater than the value of that of say Mars. You can see it, right? Of course it is better. So with this graph we can directly compare the values, and then we come to one particular decision. So this is why we have used bar plot. Now what you do, you will do this practical. You can take a screenshot here. Also you will do that particular one, for the saving, I have told you, right, in the class, to frame that program to show the changes over time.
changes over the months from the last 6 months, how the savings being means change over the time with a bar with a say line chart you have already shown. Now I want that you draw a bar plot, or you can show it draw a bar plot with this particular program. You just need to change the value. Okay, first do this one, and second then go to that particular savings program. Okay, and after doing that, share me your output, that particular chart in that group. Okay, then again, moving ahead, you come to this that we have used bar plot for comparing, and we have used dot bar function to create the graph, colors in, x-axis rotation 45 angles for better visibility. Then next one that is very important is histogram. ओके, हिस्टोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी जगह यूज करते हैं. तो हिस्टोग्राम क्या है एग्जैक्टली? दिस इज ए graphical representation of the distribution of numerical data using bins, and it shows the frequency of different data ranges. तो अलग अलग डेटा रेंजेस में कितना वैल्यूज, और यू कैन से बेटर वे फ्रीक्वेंसी क्या है, टू फाइंड आउट दैट यू कैन जस्ट टेक द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. Right. So histogram helps us to know how data is distributed. Then accordingly, you get to know that what is its pattern. Like is it normal? Is it skewed? Or is it uniform? Remember this about this data distribution, I already discussed with you, right? What does it mean by normal? What does it mean by skewed, uniform? You recall that. It's very important. Then we actually generally don't want this skewed one, right? Now, to find the data concentration in a specific range, okay, ये range में कितना data concentration है, उसको जानने के लिए भी हम क्या use कर सकते हैं? Histogram. And most importantly, जो outlier है, to detect the outliers or extreme values, we use this histogram. तो इसके लिए देखो ये प्रोग्राम है, हम यहाँ पे hist फंक्शन यूज कर रहे हैं. प्लॉट फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि ये डायमेंशन के लिए यूज कर रहे हैं 8x5, और हम हिस्टोग्राम के लिए कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? HIST, हिस्ट, राइट. तो इसमें हमने बिन्स इंटरवल्स 4 लिया है, कलर रेड लिया है, और एजेस के कलर ब्लैक लिया है. टाइटल दे दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक वैल्यूज, एक्स लेवल स्टॉक वैल्यू, वाई लेवल फ्रीक्वेंसी, एंड सो फंक्शन के जरिए ये बना दिया और ऐसा कुछ आ गया. लेट मी शो यू इन द स्पाइडर इटसेल्फ. लेट मी कोड इट फॉर यू. पर आप लोगों को स्किप नहीं करना है, जितना भी मैं यहां दिखा रहा हूं आपको करना है, बिकॉज आप बाय 9 आई वांट दैट दिस थिंग्स टू बी कंप्लीटेड विथ ए प्रॉपर कॉन्फिडेंस दैट यू हैव गॉट इट. देखो पाइथन वाला पार्ट मैंने पूरा अच्छे से आप लोगों को इंक्लूड करा दिया था. आप लोग नाउ आई कैन से दैट आप लोगों ने अच्छे से क्लास किया है, अटेंड किया है, ट्रेनिंग सेशन एंड हैंड्स ऑन सेशन. तो आप जानते हो पाइथन के बारे में, उतना जानते हो, दैट इज सफिशिएंट, राइट. हमने सब कुछ कवर किया है. अभी जो हम एआई पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, उतना जितना मैं कवर करूंगा, इतना एटलीस्ट आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. उसको लेके आप आगे और एक्सटेंड कर सकते हो, राइट. बट यू शुड नॉट स्किप दिस. तो ये करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दिखा रहा हूँ स्पाइडर में. आई एम गोइंग टू शो यू इन द स्पाइडर. जस्ट लेट मी. तो आई राइट द कोड फॉर यू. ये कोड मैंने लिख लिया है. सेम प्रोग्राम को हम मैं एक्सटेंड करते जा रहा हूँ. तो इंपोर्ट वही करना था, मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट एसप्लॉट. pandas को तो हम यूज कर रहे हैं डाटा फ्रेम बनाने के लिए. तो लास्ट में हम हिस फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये देख सकते हो, राइट. बिन्स 4 लिया है, कलर आर लिया है, एच कलर ब्लैक. तो लेट मी रन दिस पार्ट. सी दिस इज कमिंग प्रॉपरली. ये है आपका, क्या है ये 4 बिन्स हमने कंसीडर किया है, 4 इंटरवल. सो अकॉर्डिंगली दिस हिस्टोग्राम इज कमिंग, राइट. इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द ग्रुप. बट मुझे आप लोगों का आउटपुट ग्रुप में मिलना चाहिए, इसका भी, और जो मैं दूंगा करने के लिए अभी तक दिया हूं वो मिलना चाहिए. तो हिस्टोग्राम वी हैव कवर्ड, राइट. हिस्टोग्राम वी हैव कवर्ड एंड आई होप नो प्रॉब्लम विद दैट. नाउ नेक्स्ट जो मैं दिखाना चाह रहा था वो है स्कैटर प्लॉट.
स्कैटर प्लॉट क्या है? स्कैटर प्लॉट displays relationship between two numerical variables, right? It displays individual data points to show relationship between two numerical variables. We have to use it to find out the correlations, either positive, either negative or none, or to identify clusters or outliers in the data and to explore relationship between variables. तो हमें स्कैटर प्लॉट जो है हम किस लिए यूज करते हैं? जो वैल्यूज हैं, जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके बीच क्या कोरिलेशन है। अगर ज्यादा कोरिलेशन होगा तो पॉजिटिव, कुछ कोरिलेशन नहीं है या तो कम जो भी है निगेटिव, और कुछ भी नहीं है मतलब नॉन। इससे हमें आउटलायर के बारे में भी पता लगेगा, राइट? तो एग्जैक्टली हम क्या बोल सकते हैं? रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए कोड ये है कि हमें यूज करना पड़ेगा स्कैटर फंक्शन, जिसमें आप स्टॉक वैल्यू और माउंट को फाइंड इनपुट कर रहे हो। ऑब्वियसली यही दो था जो हम डाटा फ्रेम में यूज किया था, कॉलम्स, राइट? और कलर मैंने पर्पल लिया डिफाइन किया है। टाइटल ये दे दिए हैं, स्टॉक वैल्यू वर्सेस माउंट, एक्स लेवल स्टॉक वैल्यू, वाई लेवल माउंट, ग्रिड। सो लेट्स कोड इट अगेन। So I have written the code for you. Let me run it for you. So see, this is the scatter plot of this particular values. तो month हमारा जन फरवरी मंथ, मार्च अप्रैल मई जून था, स्टॉक वैल्यूज ये था। और ये इसके लिए हमने स्कैटर प्लॉट, देखो एक एक पॉइंट। जान में क्या था? 50,000। आपका मार्च में क्या था? 60,000, राइट? मार्च में, सॉरी मार्च में, हाँ ऐसा ही कुछ था, 60,000, ओके। देन फरवरी में क्या था? ये सारे पॉइंट्स का वैल्यू हमें इस स्कैटर प्लॉट से प्रॉपरली आप देख सकते हो, राइट? सो जून में क्या था आपका? 64,000, यू कैन सी दैट, राइट? फरवरी में कितना था? 60,000, फरवरी में 60,000। मार्च में क्या था? मार्च में 55. So this is it. So we can clearly detect, suppose any point is out of this bound, means some points is suppose it means the distance between that point and other points is very large, very high. Then you can say that that point is not is not a normal point. That may be an outlier, or that point is a noise, right? So with this, we get to know about all these plots, right? Right. We have discussed line, we have discussed bar plot, we have discussed histogram, very important. And then lastly, we have discussed this scatter plot. तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। आप लोग ये पूरा प्रैक्टिकल करके अपने ग्रुप में दे दो, ठीक है? हमारा जो ग्रुप है, I'll check there. So thank you. Meet you tomorrow. Bye bye.